Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this session, inshallah, we are going to learn about the explanation of Surah 69, Al Haqqah, the inevitable. First, I will talk in English, followed by Urdu for all kind of South Asian audience as well. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah amma ba'd. Surah Al Haqqah, the inevitable. This surah takes its name from the word Al Haqqah, with which it opens. Period of revelation. This too is one of the earliest surahs to be revealed in Makkah. Its subject matter shows that it was sent down at the time when opposition to the Holy Prophet, upon whom be peace, had started, but had not yet become tyrannical. Musnad Ahmad contains a tradition from Hazrat Umar saying, before embracing Islam, one day I came out of my house with a view of causing trouble to the Holy Prophet, but he had entered the Masjid al-Haram before me. When I arrived, I found that he was reciting Surah Al Haaqah in the prayer. I stood behind him and listened. As he recited the Quran, I wondered at its literary charm and beauty. Then suddenly an idea came to my mind that he must be a poet, as the Quraysh alleged. Just at that moment he recited the words, "This is the word of an honorable messenger. It is not the word of a poet." I said to myself, then he must be a soothsayer, if not a poet. Thereupon he recited the words, "Nor is it the word of a soothsayer." Little it is that you reflect. It is a revelation from the Lord and sustainer of the worlds. On hearing this, Islam entered deep into my heart. This tradition of Hazrat Umar shows that this surah had been sent down long before his acceptance of Islam. For even after this event, he did not believe for a long time, and he continued to be influenced in the favor of Islam by different incidents from time to time. Till at last, in the house of his own sister, he came by the experience that made him surrender and submit to the faith completely. Theme and subject matter. The first section, verses 1 to 37, is about the hereafter, and the second, verses 38 to 52, about the Quran's being a revelation from Allah and the Holy Prophet being a true messenger of Allah. The first session opens with the assertion that the coming of resurrection and the occurrence of the hereafter is a truth which has to take place inevitably. Then in verses 4 to 12, it has been stated that the communities that denied the hereafter in the past became worthy of Allah's scourge ultimately. In verses 13 to 17, the occurrence of resurrection has been depicted. In verses 18 to 37, the real object of which Allah has destined, a second life for mankind after the present worldly life has been enunciated. In it, we are told that on that day all men shall appear in the court of the Lord, where no secret of theirs shall remain hidden. Each man's record will be placed in his hand. Those who had spent lives in the world with the realization that one day they would have to render an account of their deeds before their Lord, who had worked righteously in the world and provided beforehand for their well-being in the hereafter, will rejoice when they see
that they have been acquitted and blessed with the eternal bliss of paradise. On the contrary, those who neither recognized the rights of Allah nor destroyed the rights of men will have no one to save them from the punishment of Allah, and they will be cast into hell. In the second section, verses 38 to 52, the disbelievers of Makkah have been addressed and told, you think this Quran is the word of a poet or a soothsayer, whereas it is a revelation set down by Allah, which is being presented by the noble messenger. The messenger by himself had no power to increase or decrease a word in it. If he forges something of his own composition into it, he will cut off his neck vein or heart vein, for this is the truth absolutely and pure, and those who give it a lie will have ultimately to regret and repent. ख़वातीन हज़रात, अब इस मालूमात व तशरीहात का उर्दू तर्जुमा। सूरा के पहले ही लफ्ज़ को उसका नाम करार दिया गया है, अल हाक़्क़ा। ज़माना नज़ूल, ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है, और इसके मज़ामीन से मालूम होता है कि ये उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत तो शुरू हो चुकी थी, मगर उसने अभी ज़्यादा शिद्दत ना इख्तियार की थी। मसनद अहमद में हज़रत उमर की रिवायत है कि इस्लाम लाने से पहले एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए घर से निकला, मगर आप मुझसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके थे। मैं पहुंचा तो आप नमाज में सूरह अल हक़्क़ा पढ़ रहे थे। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। कुरान की शान कलाम पर मैं हैरान हो रहा था कि मेरे दिल में यकायक एक ख्याल आया कि ये शख्स ज़रूर शायर है, जैसा कि कुरैश कहते हैं। फौरन ही हजूर की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है। मैंने अपने दिल में कहा कि शायर नहीं तो फिर काहन है। उसी वक़्त ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी हुए, और ना किसी काहन का कौल है। तुम लोग कभी गौर करते हो, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। ये सुनकर इस्लाम मेरे दिल में गहरा उतर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत से मालूम होता है कि ये सूरा उनके कबूल इस्लाम से बहुत पहले नाजिल हो चुकी थी, क्योंकि इस वाक़या के बाद भी एक मुद्दत तक वो ईमान नहीं लाए थे, और वक्तन फ़वक्तन मुतअद्दिद वाक़यात उनको इस्लाम से मुतासिर करते रहे थे, यहाँ तक कि अपनी बहन के घर में उनके दिल पर वो आखिरी ज़रब लगी जिसने उनको ईमान की मंजिल तक पहुँचा दिया। तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाइए तफ़हीमुल कुरान जल्द सोएम में। मौजू और मजमून, इसका पहला रकू आखिरत के बारे में बयान है। दूसरा रकू कुरान के मुनज़्ज़िल मन अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने के बारे में है। पहले रकू का आगाज इस बात से हुआ है कि क़यामत का आना और आखिरत का बर्पा होना एक ऐसी हकीकत है जो ज़रूर पेश आकर रहनी है, और फिर आयत 4 से 12 तक ये बताया गया है कि पहले जिन कौमों ने भी आखिरत का इनकार किया वो आखिरकार खुदा के अज़ाब की मुस्तहिक होकर रही हैं। इसके बाद आयत 17 तक क़यामत का नक्शा खींचा गया है कि वो किस तरह बर्पा होगी। फिर आयत 18 से 37 तक वो असल मकसद बयान किया गया है जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी के बाद नौ इंसानी के लिए एक दूसरी ज़िंदगी मुक़द्दर फरमाई है। इसमें बताया गया है कि उस रोज़ तमाम इंसान अपने रब की अदालत में पेश होंगे, जहां उनका कोई राज छुपा ना रह जाएगा। हर एक का नाम अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा। जिन लोगों ने दुनिया में ये समझते हुए ज़िंदगी बसर की थी कि एक दिन उन्हें अपने रब को अपना हिसाब देना है, और जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमल करके अपनी आखिरत की भलाई के लिए पेशगी सामान कर लिया था, वो अपना हिसाब पाक देखकर खुश हो जाएंगे और उन्हें जन्नत का अबदी ऐश नसीब होगा। इसके बरक्स जिन लोगों ने ना खुदा का हक माना ना बंदों का हक अदा किया, उन्हें खुदा की पकड़ से बचाने वाला कोई ना होगा, और वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। दूसरे रकू में कुफ़ार मक्का को खिताब करते हुए फरमाया गया है कि तुम इस कुरान को एक शायर और काहन का कलाम कहते हो।
حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگ گردن یا رگ دل کاٹ دیں۔ یہ ایک یقینی برحق کلام ہے، جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخر کار پچھتانا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الحقہ 69 سورہ 69 نمبر سورہ کی معلومات و تشریحات ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دست دعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک اور انتہائی طاقتور ذات ہمیں وہ حوصلہ اور طاقت عطا کرے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور اس کو من و ان 100% اپنی پرسنالٹیز، اپنی شخصیات، اپنے کردار، اپنے گھروں، اپنی فیملیز، معاشرے اور پوری دنیا پر اس کو نافذ کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔